Hello. Hi everyone. Checking sound once and then we'll start. Check. So I hope my audio is audible to it. Okay. Okay, guys. I hope we are all set to start today's session. As guys are following me for this particular CCNA, and we have almost covered initial base topics of our CCNA. So today we will be diving into the most challenging and most interesting part of system. So before that, let me just introduce myself for the people who are new here. So guys, hi, this is Akash, and today we are going to explore the fundamental topics in Cisco switching, the spanning tree, or as you can call it, the STP. So whether you are a beginner or a seasoned network professional, understanding STP is crucial for maintaining a stable and effective network. Okay. So if I talk about spanning tree, so spanning tree basically is a network protocol. Okay. And what it does is it will basically help you to ensure that you are working in a loop free topology. And for what particular network is it that we are achieving this? So this is basically for your Ethernet networks. So in today's video, we'll be basically covering the basic of spanning tree protocol, including how it works, the different states of spanning tree ports, the rules of root bridge in the STP process, and we'll also discuss how to configure spanning tree on Cisco switches and troubleshoot common STP issues. This series is going to be a lengthy series of 2 or 3 videos because spanning tree is an interesting topic and I don't want you guys to lag behind the understanding of spanning tree anyway. So yes, we will be taking this particular spanning tree topic in 2 or 3 videos. Okay. So if I want to start this particular session today, so just understand one thing. हमारे नेटवर्क में हमने अभी तक जितनी भी चीजें देखी हैं वहां पर हम स्विचेस को ऑलमोस्ट ट्रंक लिंक कनेक्टिविटी के लिए कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर रहे थे, राइट? द प्रॉब्लम इज अगर मैं अपने स्विचेस को इस तरीके से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता हूं तो दिस टाइप ऑफ कनेक्टिविटी between my switches would be considered as a single point of failure. Single point of failure क्यों? The reason is स्विच 0 और स्विच 1 के बीच में अभी कम्युनिकेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक यही ईथरनेट केबल कनेक्शन मौजूद है. अगर ये कनेक्टिविटी भी डाउन चली गई तो ये किसी भी हालत में आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे. एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस टाइप ऑफ कनेक्टिविटी विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर.
तो हमारे नेटवर्क में, ईथरनेट नेटवर्क्स में, जब भी आपको सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मिलता है, आप इसको मिटिगेट करने के लिए रिडंडेंसी देते हो। रिडंडेंसी, आई विल टेल यू व्हाट इट इज। गाइस, रिडंडेंसी को समझ सकते हो आप एक बैकअप देना। नाउ दिस बैकअप कुड बी ऑफ योर डिवाइसेस, ऑफ योर लिंक्स, any kind of backup it could be. Okay, so whenever you are giving your ethernet network a backup option for the failure cases, that is basically called as redundancy. बट एक और चीज ध्यान रखनी होगी आपको कि हम अपने इम्प्लीमेंटेशंस के दौरान रिडंडेंसी सिर्फ तभी ऑप्ट करेंगे जब रिडंडेंसी ना लगाने पर, दैट मीन्स विदाउट रिडंडेंसी, मुझे अगर होने वाले डैमेज का कॉस्ट हायर है, दैट मीन्स अगर मैंने रिडंडेंसी नहीं लगाई और जो डैमेज मुझे होने वाला है विदाउट अप्लाइंग रिडंडेंसी, इफ दैट डैमेज कॉस्ट इज हायर than the cost of applying the redundancy, इसी केस में हम रिडंडेंसी अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स अगर मेरे नेटवर्क में रिडंडेंसी में अप्लाई करने जा रहा हूं तो सबसे पहले देखना होगा कि डैमेज क्या हो या लॉस क्या हो, एंड लॉस पर मेरा कितना कॉस्ट इन्वेस्ट, क्या लॉस होने पर मेरा कॉस्ट जो लग रहा है वो रिडंडेंसी अप्लाई करने के कॉस्ट से कम है, ज़्यादा है। अगर लॉस का कॉस्ट ज़्यादा है, राइट, एंड रिडंडेंसी अप्लाई करने में मुझे कम लग रहा है, लेट्स से इफ रिडंडेंसी अप्लाई करने का आपको 5 रुपये लग रहा है, बट आपका जो डैमेज हो रहा है वो हो रहा है 15 रुपये का, राइट। So in that case, yes, it is a smart and wiser choice to implement redundancy, right? And this is the only option when you will implement it. Now, तो जब भी आप नेटवर्क में रिडंडेंसी देते हो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को मिटिगेट करने के लिए, guys always remember, you guys will face one challenge, that is redundancy leads to loops. Loops. Now, what is a loop? Let's about that too. So, guys, loop is an endless network segment, or you can say the endless, yeah, endless network segment. And the problem is, हमने हमारा जो इथरनेट फ्रेम हेडर देखा था, राइट, इथरनेट फ्रेम हेडर में कोई भी टीटीएल जैसा फील्ड नहीं होता है जो कि आपके टाइम को लिमिट कर दे जैसे IPv4 पैकेट्स में होता है। तो IPv4 पैकेट्स में क्या होता है, अगर वो कभी भी लूप में फंसते हैं तो वो स्पेसिफिक मशीन के अकॉर्डिंगली जो भी टीटीएल होता है मशीन का, उसके हिसाब से वो उस टीटीएल पीरियड के बाद पैकेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। द केस विद द फ्रेम्स, जो इथरनेट नेटवर्क्स में, स्विचिंग नेटवर्क्स में हमारे पास हैं, फ्रेम्स के पास ऐसा कोई भी टाइम लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। दैट इज द रीजन why any particular loop in your Ethernet network could be very troublesome for you. Come, let's see. सबसे पहले हम देखते हैं how basically the loop will be formed, and then we'll try to remove it. Okay. So let me create a similar single point of failure connectivity. Just a second.
I've taken two switches. दोनों को हम नेमिंग कर देते हैं. This is my SW1 and this is my SW2. और LAN कनेक्टिविटी के बीच में केबल कनेक्टिविटी दे देते हैं. So this is my single point of failure को mitigate करने के लिए what I can do is I can provide redundancy. That means addition of one extra link. That मैं अपने दोनों ही लिंक्स को नेमिंग भी दे देता हूँ. So let's name it as fast Ethernet 0/1, fast Ethernet 0/2, fast Ethernet 0/2 and fast Ethernet by 1. Now let's assume, देखिए redundancy तो दे दी हमने, but challenge क्या आ सकता है? Let me show you the challenge also. अब हम assume करते हैं कि हमारे पास switch 1 पे एक host device की connectivity है, and the connected host device is a PC having a MAC address of AAA. मैं reference MAC address ले रहा हूँ यहाँ पे, not the 12 hexadecimal digit MAC address. PC A है, so इसका MAC address हो जाएगा अभी मेरे reference के लिए AAA. Now I'm assuming a scenario. इसको connectivity भी दे दें. So let's take its connectivity as fast Ethernet 0/. Now PCA एक ऐसे इंस्टांस में पहुंच चुका है जहां पर उसको एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम रिलीज करना है. तो अगर ब्रॉडकास्ट फ्रेम PCA रिलीज करता है तो व्हाट वुड बी द एंट्रीज ऑफ द ब्रॉडकास्ट फ्रेम? एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम के अंदर जो एंट्रीज बनेगी, सबसे पहले PC अपना सोर्स मैक एड्रेस एसोसिएट करेगा, दैट इज AAA. एंड बीइंग ब्रॉडकास्ट, ये ट्रैफिक आपका 12 times F, दैट मींस ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस पर शेयर किया जाएगा. तो ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस गाइस होता है 12 times F, राइट? दैट मींस इट इज अ ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस. एंड ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस का काम क्या होता है? इट इज सेंट टू ऑल. Now, if PCA has generated this type of a broadcast stream, and अगर वो इसको भेजता है switch 1 के fast Ethernet 0/3 की तरफ, तो we know switches बनाते हैं MAC address table. Okay, so let's create the MAC address table for both the switches. This is the MAC address table for switch 1. ज़्यादा बड़ा बन. And this is the MAC address table of switch 2. हमने दोनों की MAC address table बना ली है. Well, now let me just put up the entries for the MAC address table here. This switch 1, 2. Guys, if you remember, MAC address table associate करता है आपका ports और MAC address का mapping, right, for the switches. तो यहाँ पर जो entries बनेंगी, those entries will be with respect to the port of the switch
and the MAC address associated to that port. जैसे ही ये ब्रॉडकास्ट फ्रेम ने शेयर किया फॉर स्विच 1 फास्ट इथरनेट 0/3, स्विच 1 सबसे पहले सोर्स मैक एड्रेस रीड आउट करके अपनी मैक एड्रेस टेबल में एंट्री बना लेगा, which stays here for the next 5 minutes if it is a dynamic entry. 5 मिनट बाद ये फ्लश आउट हो जाएगी. ओके, हाँ, अभी पीसी ने देखा कि डेस्टिनेशन क्या है, तो डेस्टिनेशन तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ब्रॉडकास्ट है. दैट मीन्स स्विचेस क्या करते हैं, अगर स्विच के पास कभी भी कोई ब्रॉडकास्ट फ्रेम आता है, बीइंग दी ऑल दी पोर्ट्स इन अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, स्विचेस अदर देन द ओरिजिनेटिंग पोर्ट हर पोर्ट पर एक एक कॉपी फ्लड कर देते हैं. ठीक है, so let me just create 2 frame copies. One would be the red color and the other one would be the green one, just to distinguish between the frames. Both the frames are the identical same frames. Okay, this same one. Now ब्रॉडकास्ट फ्रेम होने के कारण जैसे ही ये फ्रेम यहाँ पर रिसीव हुआ, सबसे पहले मैक एड्रेस टेबल में उसका एंट्री बना एंड देन उसको दोनों ही पोर्ट से फ्लड आउट कर दिया गया. नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस रेड फ्रेम. हालांकि ये दोनों ही फ्रेम सेम है, बट वी विल फोकस ऑन द रेड वन. This red frame will exit from switch 1's fast Ethernet 0/1 and it will enter to the fast Ethernet 0/2 of 2. Switch 2 भी due to its tendency of creating the MAC address table, सबसे पहले ये अपनी MAC address table generate करेगा and it will freshen up an entry for fast Ethernet 0/2 that would be of source MAC address AAA, because the frame has the exact similar entries which were initially originated. Now, being a broadcast frame, switch 2 will also do the same thing. Other than the originating port, which will flood this particular frame to the other ports. That means it will be ejected out and injected to switch 1's fast Ethernet 0/2. Once switch 2 receives it, switch 2 will again create the MAC address table entry. Say that AAA is connected at 0/2 here. Being a broadcast frame, it's my duty to forward it to all other ports than the originating one. So one frame copy would be sent out to the PC itself. Other one would again be sent in the loop to run endlessly. The same thing, guys, would happen with this green frame also. It will exit from here, reach on to switch 2's 0/1. Being a broadcast, this frame's copy would be sent back from fast Ethernet 0/2 towards switch 1. Again, MAC address table entry would be created. This is 3, sorry, my mistake. It was 3. Again, one copy would be sent out here. Another copy would be sent out in the loop to run endlessly here. Guys, can you see this 2 loops forming here? One this green dotted lines and the other one this red dotted lines. Yes, and this is what we call as the layer 2 loops. This was one of the example how you can visualize the layer 2 switching loop. So what happens is, once a loop has been introduced to your switching network, it will introduce the layer 2 switching loop. And what is the resultant or what is the outcome of this particular introduction? What happens is, if you have layer 2 switching loops introduced to your switch network or the Ethernet networks, they will sadly go down, because endlessly if a broadcast frame is being sent out, right, or is being injected to your particular switch network, it will result into a broadcast storm. And the resultant of your broadcast storm would be that your network might go down. Complete bandwidth exhaustion.
these are the few cases that could rise from the broadcast top. Okay, now what is the solution of this? The only possible solution for this particular scenario where the loops are being generated would be that anyone should run quickly and just plug out this particular cable that we had introduced for the redundancy, right? But guys, to do so, by taking out this particular cable from your particular network, you will also lose your redundancy, right? But we don't want to lose redundancy until, as well as by maintaining redundancy, we want this loop to be eliminated, right? The only possible solution that any particular layer 2 devices would be having is the implementation of spanning tree protocol. So what will spanning tree protocol do in this particular loop scenario? Always remember, spanning tree protocol is a loop avoidance protocol. What it does is it will block the loop causing port. So now the question is, how does the spanning tree blocks the loop causing port? अब हमें ये देखना होगा कि लूप कॉजिंग पोर्ट जो भी होगा उसको स्पैनिंग ट्री असल में कैसे पहचानता है और कैसे वो उसको ब्लॉक करता है. दैट इज अ थिंग दैट वी शुड लर्न अबाउट. I hope this much is clear for everyone, and now I'm proceeding ahead, guys. So let's see. To understand that particular scenario, you will have to understand कि spanning tree protocol काम कैसे. And guys, spanning tree protocol का working शुरू होता है एक इलेक्शन से, जिसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा एक नया फ्रेम. Yes, now we are going to see a different type of a frame other than the Ethernet frame. इस फ्रेम को कहा जाता है द BPDU फ्रेम. क्या होता है BPDU फ्रेम? लेट्स लुक ऑन टू दैट टू गाइस. देखिए, BPDU stands for Bridge Protocol Data Unit. असल में स्पैनिंग ट्री अभी का प्रोटोकॉल नहीं, राइट? दिस प्रोटोकॉल इज अवेलेबल और इज एग्जीक्यूटेबल इन द मार्केट फ्रॉम द टाइम व्हेन द मार्केट वाज रूल्ड ओवर बाय द ब्रिजेस. जब मार्केट में सिर्फ ब्रिज मौजूद थे, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल तब से चला आ रहा प्रोटोकॉल. एंड इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को इसीलिए यहाँ पर आपको जो फ्रेम भी दिख रहा है वहां पर आपको ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट ब्रिज का नाम दिखाई दे रहा है. आगे भी आप इसके अंदर के एंटिटीज चेक करोगे तो आपको दिखाई देंगे ब्रिज आईडीज. तो मैं कभी कभार पढ़ाने के दौरान मैं ब्रिज और स्विच दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, लाइक द ब्रिज आईडी एंड द स्विच आईडी. So please don't get yourself confused about it. Now, so what exactly is the BPDU frame? Let's look onto that too. Loop avoidance के लिए Cisco switches पर by default spanning tree enable होता है. Due to that reason, just for the loop avoidance, ताकि लूप ना बने ऑटोमेटिकली, स्पैनिंग ट्री खुद ही स्विचेस के द्वारा हर 2 सेकेंड में BPDU फ्रेम्स शेयर करता है.
Yes, because spanning tree is a separate running protocol, right? ये मल्टीकास्ट होता है इन नेचर एंड जितने भी बीपीडीयू फ्रेम्स या स्पैनर ट्री के इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज किया जाता है उनको एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस पे शेयर किया जाता है एंड द मल्टीकास्ट मैक एड्रेस दैट स्पैनर ट्री यूजेस that is 0, 1, 8, 0, 3, 2, 0, 0, colon 0, 0, 0. Here guys, the first 2 bytes, right? This 0, 1, ये असल में रिप्रेजेंट करता है आपका मल्टीकास्ट मैक एड्रेस, मल्टीकास्ट एड्रेस है, ओके. देन 80C2 असल में होता है आपका OUI जो कि IEEE के द्वारा डिफाइन किया हुआ है. This is here the OUI. And finally, जो लास्ट के 6 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, that is completely 0. ये है स्पेसिफिक मल्टीकास्ट एड्रेस within the OUI for STP. तो हर 2 सेकंड में बीपीडीयू शेयर करके स्विचेस बेसिकली आपके नेटवर्क में लूप से लड़ते रहते हैं. ओके, नाउ अगर बात की जाए ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, द बीपीडीयू, so what all things do comprise this BPDU? Guys, BPDU is a very large entity, right? ये comprise होती है of almost about 5 to, no not 5, almost 12 fields are there in the BPDU frame. If I'm not wrong. Let's see. And it would be better if you guys can remember these all 12 fields from the initial phase only, because that would be easy for everyone to understand BPDUs. And spanning tree is a topic that you guys will encounter throughout your enterprise scenario. The BPDU frame format. The very first field of your BPDU is basically the protocol identifier. This particular field is of bytes. After this comes the version field. Which is of 1 byte in size. So guys, this version field is basically there to identify the type of the protocol. By default, it would be 0x00, which is the current version of the spanning tree. Okay. Then the next field is the BPDU type. BPDU type field is also of 1 byte in length. And ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू बताता है, ठीक है, जिसका वैल्यू भी 0x00 ही होता है फॉर द कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू.
when you guys will learn CCNP, तो CCNP में आपको पता चलेगा कि BPDUs भी अलग अलग तरीके के होते हैं, राइट. कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग जाता है, टोपोलॉजी बदलने के दौरान एक अलग तरीके का BPDU जाता है. So different types of BPDUs also have the existence in the spanning tree terminologies, but we won't be looking on to that. After BPDU type, the next field is the flag field. As you know, it is of 1 byte only. तो देखो, फ्लैग फील्ड तो बेसिकली टीसी टोपोलॉजी बदल रही है आपकी, या एक्नॉलेजमेंट जा रहा है टोपोलॉजी बदलने का, उसके लिए शेयर किया जाता है, ठीक है. इसके बाद आता है आपका रूट आइडेंटिफायर. रूट आइडेंटिफायर गाइस 8 बाइट्स का फील्ड होता है, और ये बताएगा बेसिकली कि मेरा रूट ब्रिज कौन है, ठीक है, जिसमें आपका ब्रिज प्रायोरिटी भी होगा और मैक एड्रेस भी होता है रूट ब्रिज. सो इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई व्हाट डिवाइस इज योर रूट ब्रिज. क्या होता है रूट ब्रिज, हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं. रूट पाथ कॉस्ट. प्लीज डोंट बी अफ्रेड ऑफ दीज मेनी फील्ड्स. हमें इन सभी फील्ड्स को अभी याद करने की जरूरत भी नहीं है. आई एम जस्ट ड्राइंग दिस पर्टिकुलर फ्रेम फॉर यू ऑल. The only field that we will be focusing on is this field, the bridge ID. आप सभी को सिर्फ bridge ID को याद रखना है, which is of 8 bytes. Then we have port ID. Port identifier is of 2 bytes in length. It will just tell you कि किस particular interface, what is the interface which is sending the bridge from which the BPDU was sent. Okay. After this BPDU has an age to live that will be defined by the message age. This particular field is of 2 bytes in length. आपका BPDU जो होता है वो इंडिकेट करता है आपका 1/256 of a second, right? That is the message age. तो अगर ये increase होता है BPDU size, okay, that means the time duration. So that will only be done whenever your BPDUs are forwarded by the switch. And at that particular time, message age is basically used to identify or determine whether the BPDU is still valid or not. Finally, the max age, again of 2 bytes. Then comes the hello time. Hello time, guys, इसी को कहते हैं हम frequency of sending out the BPDUs. तो यहाँ पर लिखा हुआ है every 2 seconds, that is basically the hello time. And finally, at the end, would be your forward delay. Forward delay is a cool timer. ने ही आपके spanning tree के time durations को delay किया हुआ है. Like you can understand, there would be some different states जो कि forward delay के कारण ही hold पर रहते हैं. So this is your entire BPDU frame format. Don't worry about this particular entire explanation. I'm not going to explain anything out of it. Okay. Guys, only focus on this bridge ID here. हम बात करेंगे यहाँ पे bridge ID की. एक bridge ID वो information होता है जो 2 entities से मिलकर के बनता है. The very first entity is the priority value. And the second entity is the base MAC address of your switch. And being the spanning tree terminology, by default priority of Cisco devices is 3, 2, 7, 6, 8. MAC address would be the base MAC address of the switch, and always remember, newer the switch,
higher will be the MAC. Okay, there would be many people who would be like thinking about why the newer switch would be having the high MAC address. That's very simple thing. अगर मेरे पास 1 से 10 तक की सीरीज का नंबर सिस्टम है, राइट, मुझे 10 मशीनें बनानी है. I'll start making from device number 1. उसको 1 नंबर दिया, device 2 बना तो 2 दिया, 3 बना तो 3 दिया, 4 बना तो 4 दिया. Similar manner, MAC address is also assigned to the devices. So older the device, lower the MAC address. Newer the device, higher the MAC. I hope this is clear for everyone. तो ध्यान रखिएगा, जितना भी नया स्विच होगा आपका या जितना भी नया डिवाइस होगा, उसका मैक एड्रेस आपके एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के मौजूदा डिवाइसेस के मैक एड्रेसेस से हमेशा हायर होगा. एंड दैट इज द चैलेंज वेयर यू विल फेस if you want a new upgraded device to be the point of your network in case of spanning tree. We'll look on to that. Let's see. So bridge ID दो entities से मिलकर बनता है, priority value and MAC address. Priority एक 16 बिट का एंटिटी होता है और मैक एड्रेस की बात करें तो योर मैक एड्रेस इज 48 बिट एंटिटी, 48 बिट्स. ऑल इन ऑल टोटली आपका ब्रिज आईडी अब हम याद रखेंगे नॉट विद द 8 बाइट्स बट 64 बिट्स बिकॉज वी आर गोइंग टू ब्रेक इट डाउन. नाउ वी आर गोइंग टू सी exactly spanning tree काम कैसे करता है, right? So how exactly spanning tree works? For that, you guys will have to see the spanning tree elections, STP election. Let's switch to the next page. I don't have enough space here. So to explain this, we will again jump into a redundant scenario where the switches will be forming up a redundant topology. Along with that, there would be a loop also between the switches. Guys, maintain close focus onto it. Just take a breath and refresh your mind because this is the most crucial and the most important part of DASPAN. I have taken 3 switches. I will be naming them as switch 1, switch 2, switch 3. Let's create a looped environment between them. For your reference, I'm going to name these particular ports. Let's name this as fast Ethernet F0 by 1, F0 by 2, F0 by 2, F0 by 1, F0 by 2, F0 by 1. Assuming all these particular connectivities, they are connected, okay? Not the drawn lines. Yeah. So now, this is a looped environment. Now what happens is, initially every particular switch will imagine कि वही root bridge है, ठीक है? क्योंकि जब तक वो मार्केट में निकलेगा नहीं उसको लगता है वही root bridge है, he is the king of the entire switching topology and this spanning tree. But you can only analyze your skills when you step into it, right? Similarly, once the entire switch topology is active and they are connected towards other devices in the switch network, the Ethernet connectivity of the switches will start exchanging the BPDs.
This BPD exchange will take place in the entire switch topology. Case and the reason of it is to identify and just to know and verify who will be the king of the spanning tree. That means the root bridge. So guys, do remember, in order to block the loop causing port, अगर जब भी कभी भी spanning tree protocol आपका loop बनाने पर पोर्ट को ब्लॉक करता है ना, तो सबसे पहला स्टेप जो वो उठाता है वो होता है रूट ब्रिज इलेक्शन. अब आपको यहाँ पर कई सारे नए नए अलग अलग टर्म्स मिलने वाले हैं. ओके, रूट ब्रिज को आप रूट स्विच भी कह सकते हो, नो वरीज, बिकॉज दिस प्रोटोकॉल वाज एग्जीक्यूटेबल जब ब्रिजेस बने हुए थे, बट प्रेजेंटली वी आर डीलिंग विद द स्विचेस. तो रूट ब्रिज का इलेक्शन किया कैसे जाता है? ऑलवेज रिमेंबर, स्पैनिंग ट्री के केसेस में कोई भी एंटिटी आप ले लो, लीस्ट विल बी द बेस्ट. तो इन केस ऑफ स्पैनिंग ट्री, लीस्ट इज द बेस्ट. So whatever entity would be the of the least value, that will be the best possible option or best possible solution for spanning tree. Always remember. Now, तो root bridge कौन होगा? Devices BPDU exchange कर रहे हैं. BPDU के अंदर मैंने आपको फोकस करने के लिए बोला था bridge ID पर. Initially, whenever you exchange the BPDUs, आप bridge IDs को मैच करोगे. एक स्विच, हम तीनों स्विचेस पर यहाँ पर ले लेते हैं इनके MAC addresses. So let's take switch 1's base MAC address to be AAA. I'll just use a different name. So AAA is the base MAC of switch 1. BBB is the base MAC of switch 2. And CCC is the base MAC of switch 3. But bridge ID also combines the priority value, which is 32768 common for all the three devices. So initially when this green BPDU exchange is taking place, actually these particular informations are being exchanged within the switches. Switch 1 attains AAA as the least MAC address in the environment. Switch 2 has the median of the MAC addresses, and switch 3 has the highest MAC address available. Because bridge ID is the election mechanism that will be taking the existence here for the root bridge election, the least bridge ID switch will become the root bridge. तो मैं कैसे पहचानूंगा मेरा लीस्ट ब्रिज आईडी कौन सा है? कैसे देखो, ब्रिज आईडी तो दो चीजों से बनता है, प्रायोरिटी और मैक एड्रेस. क्योंकि प्रायोरिटी इस वक्त कॉमन है, इसलिए हम मैक एड्रेस को ऐसा टाई ब्रेकर यूज करें. बट डू रिमेंबर, इन द ब्रिज आईडी फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू द प्रायोरिटी वैल्यू फॉर द इलेक्शन, and second preference is given to the base MAC address of the switch. So as here the priority is common, we will be going with these reference MAC address or the MAC address, base MAC address of the switches. Being MAC address is the hexadecimal value, क्योंकि MAC address जो होता है तुम्हारा वो hexadecimal में represent किया जाता है. Hexadecimal में triple A, B and C में A is the least available hexadecimal digit. So triple A is the least available MAC address in the scenario. This कारण से switch 1 will be elected as the root bridge for this scenario. BPD exchange के बाद the very first step has made switch 1 the root bridge. Now remember one more thing. Root bridge असल में आपके नेट स्विचिंग टोपोलॉजी में आपका फोकल पॉइंट होता है.
असल में क्या हो रहा है, मेरे पास एक लूप बना हुआ है। अब अगर मुझे लूप को खत्म करना है तो आई हैव टू कट इट आउट फ्रॉम अ सेगमेंट, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, राइट? कहीं ना कहीं से इसको एक एंड देना होगा। लूप इज एन एंडलेस रिंग, so once you create it like a end-to-end line segment, that is basically the solution of this particular loops mitigation, right? So how we can do it is, first of all, आप एक अपने टोपोलॉजी का फोकल पॉइंट या वो डिवाइस देख लो जहां से आपके सारे के सारे ट्रैफिक को फ्लो करके जाना मैंडेटरी हो जाएगा। एंड व्हाट पर्टिकुलर डिवाइस विल बी इलेक्टेड फॉर योर रूट ब्रिज? आप हमेशा अपने नेटवर्क में ऐसे स्विच को रूट ब्रिज बनाओगे विच इज द मोस्ट अपग्रेडेड स्विच, एंड वो सबसे ज्यादा लोड झेल पाए। So it has to be the high-end version of the upgraded switches available in the entire switch topology. आप उसी को रूट ब्रिज बनाना पसंद करें। जैसे ही आपके नेटवर्क में रूट ब्रिज बन जाता है, रूट ब्रिज के सारे पोर्ट चले जाते हैं फॉरवर्डिंग स्टेट पर, एंड इन पोर्ट्स को एक रोल असाइन होता है। The role that these particular ports attain, that is called as the designated port or the DP port. Designated port. I'll write it for your reference. Guys, in case कभी आपको ये notes भी handwritten notes की भी जरूरत है, तो yes, I can share those particular notes. Just drop down your drop down a comment over to the video that you needed, and आप अपना personal email भी यहाँ पर डालो, right? Whosoever needs these handwritten notes of mine, definitely we will share that particular PDF file. Everyone whosoever needs it. तो रूट ब्रिज इलेक्शन में डेजिग्नेटेड पोर्ट डिफाइन हुआ। जैसे डेजिग्नेटेड पोर्ट आया है वो फॉरवर्डिंग स्टेट पर चला गया है, राइट? डेजिग्नेटेड पोर्ट हमेशा फॉरवर्डिंग रोल पे जाएगा। अभी आता है आपके स्पैनिंग ट्री इलेक्शन का स्टेप 2। इन दिस सेकंड स्टेप, देखो रूट ब्रिज इलेक्ट हो गया, दैट मींस अब नेटवर्क में बचे हुए जितने भी डिवाइसेस हैं वो नॉन रूट है। हम उनको नॉन रूट ब्रिज या नॉन रूट स्विच बोल सकते हैं। नाउ द सेकंड स्टेप इज ऑफ द नॉन रूट डिवाइसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रूट ब्रिज असल में आपके पूरे टोपोलॉजी का फोकल पॉइंट होता है, राइट? तो बीइंग द फोकल पॉइंट, सभी नॉन रूट डिवाइसेस भी ये जानते हैं कि अगर वो रूट ब्रिज बन चुका है तो हमें अब सबसे पहले तो उस तक पहुंचने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ इलेक्ट करके उसको मेजर मैंडेट पाथ बना देना चाहिए। ये पाथ तो हमेशा फॉरवर्डिंग पर रहेगा। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ विल बी द बेस्ट पाथ, एंड आप ऑप्टिमल तरीके से अपने फ्रेम्स को प्रोपगेट कर पाओगे नेटवर्क में। तो नॉन रूट ब्रिजेस कैसे पता करेंगे कौन सा पोर्ट है जिससे वो जल्दी पहुंच पाएंगे स्विच रूट ब्रिज तक? हालांकि हम देख करके बता सकते हैं कि स्विच 2 के लिए फास्ट इथरनेट 0/2 है एंड स्विच के लिए फास्ट इथरनेट 0/1।
But devices as a machine, how will they identify? You guys remember, shortest path identification के लिए root bridges या non-root devices identify करते हैं cost of the links. Now, links के cost को आप कैसे identify कर सकते हो? To use the links cost, यहाँ पर दो तरीके के methods Cisco ने define करके रखे हुए हैं. Okay, one is the long cost method that I have not implemented for your studies, and the second method is short cost method that we will be utilizing for our CCNA studies. But yes, एक बार please आप लोग just for your knowledge purpose and the expansion of the courses upgrade, जरूर चेक कर लीजिएगा what is the long cost. I won't be discussing it as of now. हम चलेंगे short cost method के basis पर. तो अब देखो यहाँ पर ना इन लिंक्स का जो कॉस्ट डिफाइन किया गया है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं दिया हुआ है. सो आई कैन नॉट टेल यू व्हाई दिस पर्टिकुलर लिंक हैज दिस पर्टिकुलर कॉस्ट, बट इट हैज बीन प्री डिफाइंड फ्रॉम ऑल द वेंडर्स. ओके, so Cisco has predefined that the Ethernet links Ethernet means the particular ports having the 10 Mbps of bandwidth transmission, right? So Ethernet links have a cost of 100. Whereas if we go for the fast Ethernet links, the links having the bandwidth transmission of 100 Mbps, they have a cost value of 19. If you move ahead for more high-speed interfaces like the gigabit interface, thousand Mbps port, it will give you the cost of 4. And if you even increment it to much more high-speed interface, that means the 10,000 Mbps port, the 10 gig Ethernet, it has a cost variance of 2. Now, हमारे topology में we have the fast Ethernet links. So we will be calculating the cost values on the basis of 19 as a port cost. And one note has to be mentioned here, that is, ये कई लोग ना इसको इग्नोर कर देते हैं, बट हमेशा ध्यान रखना आपका जो पोर्ट कॉस्ट होता है, इन टर्म्स ऑफ द कैलकुलेशन, जब आप शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करोगे तो आपका जो कॉस्ट कैलकुलेशन होता है वो हमेशा रिसीविंग पोर्ट पे किया जाता है, नॉट ऑन द सेंडिंग पोर्ट. Although we knew the answers initially, but let's see
on the basis of cost. So switch 2, if it chooses the 0 by 1 interface, that definitely it will not. Started from cost 0. Once reached to switch 3, its cost became 19. Went out with the cost of 19. Once reached to switch 1, 19 plus 19 would be 38, I guess. So if switch 2 opts fast Ethernet 0 by 1 as its path, it will be a cost of 38 that it has to bear. But if switch 2 elects 0 by 2 as its shortest path, the only cost it will bear will be 19. And as spanning tree always entertains the least value, that will be the best path, right? So switch 2 elects 0 by 2 as its shortest path. Similarly, switch 3 will elect 0 by 1 as its shortest path. As soon as the non-root bridges have elected the shortest path, these particular interfaces will immediately go into the forwarding state again. But the roles that these will get, here the role will be the RP. RP basically stands for root port. Root port is basically directly pointing towards your root bridge. And this will also go into the forwarding state. This was the important step of spanning tree election, guys, because what happens is I'm breaking down the entire election process into three specific steps. The only execution of second step might go continuously hand in hand until you end up with the final link or the final connectivity of the loop avoidance. Okay. The second step is the only step that will continuously execute in your environment, or else the entire spanning tree election process is of 3 steps only. Now, the final step. Step number 3. Blocking the port. Loses bridge ID announcement. So now what happened is the entire topology is summarized, and now we are ending up with just this individual link between switch 2 and switch. That means either 0 by 1 of switch 2 or 0 by 2 of switch 3. Either of these two particular port is going to get into the blocking state. How we will identify that? For that, again, we will exchange the BPD zone. Okay? So once the BPDs are exchanged, it's clearly visible, being priority common, switch 2 have the least MAC address available, so switch 2 will win the selection. Upon winning the selection, switch 2's 0 by 1 interface will go into the forwarding state, and the role it will associate itself would be the designated port. Again, yes, designated port. And the other port who has lost the election, sadly, will go into the blocking state.
and the port role that the blocking port will associate to would be the alternate port, the AP port. By attaining alternate role. And guys, whatever port goes into the blocking state, the link light would be amber in color. Amber is basically the orange color that we see. Amber is basically taken out of, is a word that has been taken out from fire, right? So yes, the ports, whenever they get into the blocking or some error happens, right? They encounter any error, they'll definitely jump into the amber state. The light will start blinking the amber color. And guys, this is how the spanning tree blocks the loop causing port. But one more thing, this entire process is automatic, right? You don't have to execute this process. क्यों बताया मैंने आपको ये process? The only reason of explaining this entire scenario is इस ऑटोमेटेड प्रोसेस को अगर आप समझ जाते हो तो आप अपने स्विच टोपोलॉजी को आप अपने स्विच नेटवर्क को ग्रैनुलर लेवल पर कंट्रोल कर पाओगे, राइट? अब मुझे पता है कि भाई ब्रिज आईडी के अंदर प्रायोरिटी को पहली प्रेफरेंस दी जाती है, फिर मैक एड्रेस आता है. अगर मुझे प्रेफरेंस के बेसिस पर इलेक्ट करना है मेरा एक रूट ब्रिज, तो डेफिनेटली मैं प्रायोरिटी के साथ गेम करूंगा, राइट? आई विल बी ऑप्टिमाइजिंग द प्रायोरिटी ऑफ माय स्विचेस. एंड यस, दैट विल बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर आवर स्टडीज. हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप ब्रिज आईडीज या स्विचेस के टोपोलॉजीज में अपने मन चाहे डिवाइसेस को रूट ब्रिज बना सकते हो. बट बिफोर दैट गाइस, आई विल इंट्रोड्यूस यू द एंटायर सिनेरियो ऑफ स्पैनिंग ट्री. नाउ हमने अभी जो पढ़ा है दैट इज बेसिकली आइडेंटिफाइड एज द कॉमन स्पैनिंग ट्री. इसे कहा जाता है कॉमन स्पैनिंग ट्री. और इन शॉर्ट यू विल कॉल इट एज द CST. बस ध्यान रखना, कॉमन स्पैनिंग ट्री एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है. एंड ये डेफिनेटली IEEE का स्टैंडर्ड फॉलो करता है. लेट मी check, just verify once कि क्या स्टैंडर्ड है, because I am very bad with the standards remembrance. Yeah, so it follows the IEEE standard 802.1e. आप इसको किस तरीके से याद रखो? कॉमन स्पैनिंग ट्री का जो की हाईलाइट जो आपको याद रखना है, दैट विल बी दैट here only single instance of STP is available for all the VLANs. Yes, that means sadly, this is not what the Cisco devices operate, right? असल में Cisco devices जिस particular protocol को operate करते हैं अपने switched environment में for the loop awareness mechanism, उस particular protocol को कहा जाता है per VLAN spanning tree, the second flavor of STP. Per VLAN spanning tree.
or in short, you call it as PVST. One more thing, PVST के अंदर जो खासियत है, that is, this is a Cisco's proprietary protocol definitely. Other than that, यहाँ पर there is a dedicated spanning tree instance for every VLAN. पर VLAN spanning tree के अंदर क्या है? देखो, Cisco always takes care of the proper bandwidth utilization, ample amount of traffic that has to be free, right? Everything is taken care of within the Cisco's environment. So Cisco has taken care that, okay, fine, spanning tree का single instance अगर सभी VLANs को manage कर रहा है, तो it is a very cumbersome task, and definitely it's an overload over to the STP process of the spanning switches. So how will we deal it is, Cisco पर implemented per VLAN spanning tree, आपके devices में जितने VLANs बने होंगे, हर VLAN के लिए एक नया spanning tree instance बनाता है. Let's say अगर मैंने 10 VLANs बनाए हैं, तो for 10 VLANs, I will be operating along with 10 different spanning tree instances. This कारण से मेरा execution of the loop avoidance mechanism in the switch topology, it becomes pretty easy. Now one more thing, open standard was CST. Cisco's proprietary was per VLAN spanning tree, but Cisco devices जिस protocol पे operate करते हैं, that protocol is the third one, per VLAN spanning tree. Plus, as this plus sign basically resembles कि ये particular protocol open standard variation और Cisco proprietary variation दोनों को ही support करता है. Both in Cisco. Now, major जो change आया है over to the per VLAN spanning tree from the common spanning tree, that is over to the bridge ID only. हम इसको सिर्फ bridge ID तक देखते हैं, उसके बाद we'll take a quick break of 2 minutes and then we'll just summarize the session and we'll move on to the wrap up part. So guys, हमने देखा common spanning tree and then we saw the per VLAN spanning tree, or let's say the PVST plus, one and all same thing. Common spanning tree में आपके पास जो bridge ID था, your bridge ID here was of 64 bits, right? Don't worry. In PVST plus also, the size has not been changed. Here, bridge ID was comprised of two entities. One was your priority, and other one was the base MAC address of the switch. The priority was of 16 bits and base MAC was of 48 bits, right?
this is the part where the change has taken place. Abhi, in your PVST plus ब्रिज आईडी को दो हिस्सों में नहीं, तीन हिस्सों में ब्रेक डाउन किया गया है, where the initial two parts are the combination of your priority value only. पहले हमारा प्रायोरिटी वैल्यू जो 16 बिट का हुआ करता था, it has been broken down into two different parts. Priority value of 4 bits and it is associated to the extended system ID, which has taken the rest of the 12 bits of the priority value. Bits. So all in all, totally 12 plus 4 is 16 only, right? But this is the breakdown now in the per VLAN spanning tree. Other than that, yes, your MAC address is still available in the same existence of 48 bits. Now, मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक वेरिएशन बताया था कि आप अपने मनमर्जी मुताबिक भी रूट ब्रिज इलेक्ट कर सकते हो, राइट? रूट ब्रिज इलेक्शन के लिए आप प्रायोरिटी वैल्यू को बदलते हो। तो पर VLAN स्पैनिंग ट्री में आप हर VLAN के लिए प्रायोरिटी वैल्यू बदल सकते हो, एंड आपका सिंटेक्स जिससे आप रूट ब्रिज इलेक्शन करवाओगे, दैट पर्टिकुलर सिंटेक्स ऑफ द कमांड इज मैं दोनों वेरिएशंस दिखा रहा हूं आपको, द फर्स्ट प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट. या दूसरा तरीका होता है जहां पर आप प्रायोरिटी को मैनुअली बदलते हो. मैनुअल प्रायोरिटी वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन. Just a second, guys. Settings here. Allow me a second, please. Now,
So let's get back to the election of the root bridge here. Yes. तो रूट ब्रिज इलेक्ट करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हो, हालांकि दोनों में ही प्रायोरिटी बदलती है, बट पहला तरीका है प्राइमरी और रूट ब्रिज सेकेंडरी रूट ब्रिज इलेक्शन, दूसरा है मैनुअली प्रायोरिटी बदल के ही आप रूट ब्रिज को इलेक्ट कर लें। फर्स्ट मेथड, प्राइमरी रूट इलेक्ट करने के लिए आप जो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, दैट पर्टिकुलर कमांड इज स्पैनिंग ट्री। आपको पर वीलाइन स्पैनिंग ट्री का रिफ्लेक्शन हर जगह दिखी जाएगा सिंटेक्स में भी। उसके बाद आपको स्पेसिफाई करना होता है आप किस वीलाइन के लिए करना चाहते हो, फ्रॉम द कीवर्ड एंड देन स्पेसिफाई योर वीलाइन आईडी। Now use the keyword root and then finally VLAN 1, let's say 1 it is, and then root, and now you selected the keyword primary. Or on the other place, for the secondary root bridge direction, that would be the backup for the primary root bridge. Command would just change the keyword at the last place, secondary. इसमें याद रखने वाला चीज जो है गाइस वो ये है कि प्राइमरी कमांड क्या करता है। I'll just write the information about the primary command. It evaluates the entire switch topology. Right, spelling mistake, my bad. Entire switched topology and assigns the least available valid priority so that the switch becomes root. Second thing, for the very first time जब आप primary command execute करोगे आपके environment में without touching your particular topology, okay, and let's say it is the first time you're executing this command. So primary command for the very first time gives the priority value as remember this value, mug it up, 2, 4, 5, 7, 6. Okay, I'll just proceed ahead with the explanation in this sentence only. And if executed again, then it keeps on decrementing in multiples of 4, 0, 9, 6. So yes,
4096 has a significant value in the per VLAN spanning tree scenario. I'm going to explain that very soon. But before that, let's quickly look on to the secondary keyword. Secondary keyword will always assign the same priority value, that is 28672. Always assigns. Two, 8, 6, 7, 2 as priority. Never change. Second command variation for the priority keyword. Whenever you, let's say you want the root bridge to be elected on the basis of the least priority, and the priority has to be defined manually, the command would be similar command with the slight change of some keyword here. Rather than root, you'll use the keyword here as priority. But do remember, after hitting space, hit a question mark so that you can identify the possible priority values which are in the increments of 4096. The values would be 0, 4096, 8192, 16384, and then, sorry, there would be one more value here, 92 plus 96. Let me just rerun this particular command in the switch, and I'll quickly just and type it here. Running tree, then number 1, priority command. Yeah, after 8192 it is 128888, 12288. Yes. Then it will be 16384, 0480, 24576, 28672. We saw both the primary and secondary root priorities. Then you are going to see your default priority value 32768. Again add it to 36864. Then 40960, 45056. I know guys, it is quite boring, but yes, there is a reason behind this also, why I'm doing so. Just a second. 53248, 57344. Finally, the last value 6144. This clearly signifies that the priority value of per VLAN spanning tree can be entered between 0 to 61444, irrespective of it being a 16-bit entity. The reason of this entire thing is the change in the bridge ID. Guys, remember, this bridge ID has been broken down the priority into 2 parts. Now, priority plus system extended system ID was also introduced here, right? Now, if you look onto the extended system ID, worry not, this is just your VLAN ID. Remember, VLAN is of 12 bits. This is the VLAN ID only. Now, in PVST, the 12-bit ID is basically used for the VLAN representation. Okay, so that we can identify every particular VLAN have a unique span tree instance. Here, the bridge ID, the priority became of 4 bits. That allows only 16 possible values. Remember, bits means 2 possible combinations. So 2 raised to the power 4 possible combinations of it. That will result into 16 possible values. So priority can only have 16 values here now. That was the first thing. But why in the increments of 4096? See, 16 possible values were
filled in the places from 0 to 15. However, as here we have the extended system ID which consumes the 12 bits, the actual configurable priority values are limited to the increments that account for the full 16 values of the extended system ID. So priorities will be incremented by 4096 because after the 12 bits, here the 4 bits of 16 is here, right? So 2 raised to the power 12, which will give you a total value of 4096. Okay, so 4096 is the base of the calculation for the priority values. यहाँ पर क्या हुआ, 12 बिट का VLAN ID या एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी था आपका. हमें पता है बिट्स मतलब 2 पॉसिबल वैल्यूज. 12 बिट मतलब इन 2 पॉसिबल वैल्यूज के 12 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, मतलब 2 की पावर 12, जिसमें आपको वैल्यू मिलेगा 4096. तो 4096 आपका एक वैल्यू आया है जो सिस्टम आईडी एक्सटेंशन का कोर प्रायोरिटी वैल्यू है. अब आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो इंक्रीमेंट भी प्रायोरिटी वैल्यू का इसीलिए 4096 के बेसिस पर किया गया है. तो ये स्टार्ट हुआ है आपका 0 से और 4096 ऐड होते गए हैं आपके सब जगह, एंड दीज आर द 16 पॉसिबल वैल्यूज जो आप प्रायोरिटी पर असाइन कर सकते हो. तो गाइस, दिस वाज माय टाइम फॉर टुडे. आज के लिए हम सेशन को इतना ही रखेंगे बिकॉज आई नो वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर, राइट. कई सारी इंडिविजुअल वैल्यूज के बारे में हमने यहाँ पे ऑब्जर्व भी किया है. तो हम इस कैलकुलेशन को आज यहीं तक के लिए छोड़ते हैं. ओके, being this the wrap up, our deep diving of spanning tree protocol is still pending. We today have properly navigated to the crucial roles in maintaining the loop-free network environment. We have seen कि किस तरीके से spanning tree protocol loop avoid करने के लिए पोर्ट को ब्लॉक करता है. ठीक है, हमने BPDU फ्रेम फॉर्मेट कवर किया है. मल्टीकास्ट लेयर 2 एड्रेस है ये, क्यों प्रायोरिटी की PBST प्लस में सेट की गई है 4096 पर, ये सब चीजें हमने कवर की है. इन कंसेप्ट्स को समझना एसेंशियल है. साथ ही साथ कोई भी जो नेटवर्क मैनेजमेंट या डिजाइनिंग पार्ट पर इन्वॉल्व है, राइट, उनके लिए ये भी इंश्योर करता है कि आप अपने नेटवर्क परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी को इफेक्टिवली ऑप्टिमाइज कर पाओ. Okay guys, so now if you guys have found this particular video helpful, please give it a thumbs up and share it with your colleagues. Don't forget to subscribe to our channel and hit this particular bell icon so you never miss particular updates whatever we keep on posting over to our channel. And if you have any particular question or topics that you'd like us to cover up, drop them in the comments below. Thank you so much for watching. Until next time, keep your networks running smooth. Bye.